Good evening, all of you. Today we are going to study some DDL commands, that is alter table, drop table and rename command. In previous video we have studied about SQL constraint, and in other previous videos we have studied about DML statements. So let's start the video. Now, before proceeding further, I would request, if you like this video, please like, share and subscribe. So let us proceed with the video. Alter table command actually allows us to make changes in the table structure. When we talk about table structure, that means we are talking about the table schema, the outline of the table, the container of the table. And container means column name, its data type, size and constraint, if any, that is applied on the column. Constraint we have already studied. That means we make the changes in the table structure here. What changes? We can add new column into the table. We can delete existing column from the table. We can modify the existing column within the table. Modification means we can change the name of the column, data type, its size, its constraints, etc., etc., and the position of the column even. Suppose your column was defined on third position and it has to be brought up on first position or after certain column, then we can all these activities can be performed using alter table command. So first of all we will study how to add a new column into the table. The syntax is alter table, table name, add, then column is optional here, either you write column or don't write, ignore it. सो ऐड के बाद आप सीधा कॉलम नेम भी लिख सकते हो या ऐड के बाद कॉलम कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन विद इन ब्रैकेट साइज. साइज इज ऑप्शनल इन सर्टेन केसेस. सपोज इंटीजर आप लिखते हैं तो साइज देने की जरूरत नहीं होती, वो डिफॉल्ट साइज पिक करता है. देन कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल. इफ यू वांट टू पुट द कंस्ट्रेंट you can, otherwise you can ignore. See the example. Alter table student, add column address varchar 35. That means you are going to add one new column named address in the table student, whose data type is varchar and size is 35. The same command can be written without writing the keyword column. Add के बाद जो column है इसको आप हटा करके लिख सकते हैं. Alter table, table name student, add column name address varchar 35. This will also run as it is without any problem. So this is how we can add a new column. See it practically. I have described the table student. So got student ID, first name, last name and course ID. There are 4 columns. After that I had tried to add one more column. Alter table student, add column address varchar 35. So after adding this query is okay, and 4 rows affected. That means इसमें 4 रो पहले से फीड की गई हैं, 4 रिकॉर्ड. And this is the 5th column added. When we display the table structure again by using describe or desc command space table name, so you can see the last column address has been added with the same specification as we have defined here, varchar 35. Now select star from student. If we see what are the values that has been automatically entered into the address column, because we have not entered any value, we have just defined the column address. So all values within this column have been initiated with null values. So when we add a new column, there in each row null value is automatically feeded or entered. Next, using alter table we can also modify a column definition. When we say modify a column definition, that means the columns data type, size and constraint etc. can be modified.
Command syntax may be alter table, table name, modify, column name, data type, size, constraint. Example may be alter table student, modify last name. Last name is being modified with char 15. Earlier it was suppose something else and you are making it char 15. Earlier it was char 4. Char 15 not null constraint भी आपने लगा दी. So this is the table structure we have displayed before modification of the column last name, having last name as varchar 10, right? And after modification, see command has been issued alter table student modify last name char 15 not null. After this command is entered, query is okay. Again we are describing the table student. We can see now last name char 15. We have specified last name char 15. Earlier last name was varchar 10. So now the modification in the data type as well as size of the column last name have been done using alter table student modify. Modify keyword will be used. Modify clause will be used here. This is after modification and this is before modification specification of that column. So this is how we can modify a column. Now using alter table we can also delete a particular column from the table. See the syntax alter table table name drop column column name. Here column keyword is optional again. So we can write in two ways alter table student drop column address or alter table student drop address only. So both the commands are equivalent, can be done, have same effect. Here you can see one more column address has been added in previous slide. यहाँ से आप देखें इसमें नया कॉलम हमने ऐड किया था एड्रेस के नाम से. You can see add column address varchar 35. So suppose I want to delete the same column. यहाँ से मैं एड्रेस कॉलम फिर से हटाना चाहता हूँ. So we will issue the command alter table name that is student drop column address, or you can also write alter table student drop address. So that will also be accepted. At the end you have to put the semicolon. Then once we describe the table we will find that column address is not present here. Earlier column address was present with the specification varchar 35. After deleting that particular column, this address column is not visible in the structure. So it ensures that our column address has been removed from the table structure. Now we can also change the name of the column and its position can be shifted. How? See the syntax. We have to use a change keyword here. You can see and observe alter table table name add आपने यूज किया, alter table table name फिर आपने modify यूज किया, alter table table name then drop आपने यूज किया. Now you are going to use alter table table name change keyword. What is purpose of using change keyword? If you may basic purpose is if you want to change the name of a particular column with a new name, then we can use change, right? So see the syntax alter table table name change old column name space new column name data type size. In this statement we can use first or after keyword. फर्स्ट और आफ्टर. फर्स्ट लिख देंगे तो आपका ये जो चेंज कर रहे हैं दैट कॉलम विल बिकम फर्स्ट कॉलम, विल गो एट द टॉप. और यू कैन प्लेस दिस कॉलम दैट इज न्यू कॉलम कैन बी प्लेस्ड आफ्टर सर्टेन कॉलम नेम, आफ्टर पर्टिकुलर कॉलम नेम. So either you can make the current column that is new column that is being changed as a first column name or after certain column name. See the example, it will be clear. Alter table table name change last name char 20 after student id. What does it mean? Last name जो आपका column है that will be shifted to after student id. Last name is shifted to
after student ID, then alter table student change last name care 21st. What does it mean? यहाँ पर एक चीज छूट गई है, you should manage it. Alter table table name change last name space, यहाँ पर नए कॉलम का नाम लिखना होगा, से एल नेम care 20 after student ID. Alter table student change last name space एल नेम care 21st. इसे आप ठीक कर लीजिएगा. Now I have left the new column name to be written. After last name I have to write new column name, that is L name. Here you can see in example it is done for you. So before changing, we have described the table student having 4 columns: student ID, first name, last name, course ID. This is the sequence of these columns. Then I have issued the command alter table student change last name to L name. Last name space L name. That means the name of the column last name will be changed to L name. Data type will be char 20. Earlier last name's data type was char 15. Then you are putting after clause after student ID. When we are using after, then we have to write a column name. When we are using first, we need not to write any column name after first, because the current column name which is being changed will become the first column. तो ध्यान रखें कि आफ्टर के बाद आपको कॉलम नेम कुछ लिखना है कि किस कॉलम के बाद उसे शिफ्ट करना है. और अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर आफ्टर की जगह फर्स्ट, तो फर्स्ट के बाद ये आपको स्पेसिफिकेशन कॉलम नेम का नहीं देना है, क्योंकि ये वाला कॉलम एल नेम आपका फर्स्ट कॉलम नेम हो जाएगा. सो क्वेरी इज ओके. आफ्टर डिस्क्राइबिंग दिस टेबल यू कैन सी स्टूडेंट आईडी, और इसके बाद मैंने क्या लिखा था, आफ्टर स्टूडेंट आईडी आपका एल नेम हो जाएगा. सी आफ्टर स्टूडेंट आईडी एल नेम हैज कम, दैट वाज चेंज्ड इन प्लेस ऑफ लास्ट नेम. Earlier last name was on third position. Now it has become on second position after student ID. First name and course ID is as it is. Course ID has become the last column. That was last column earlier also. Or L name has been changed with specification char 20. Right? So position and column name both are changed. Column name has been changed from last name to L name, and position has been changed after student ID. Earlier it was after first name. Got it? इसी तरह से आप फर्स्ट वाला भी लिख सकते हैं, एल नेम कैर 20, आगे फर्स्ट लिख दीजिए और बाद में कॉलम नेम मत लिखिए. राइट. नेक्स्ट. Here I am giving the example of first also. You can see alter table name change L name to L name. L name को मैंने L name ही किया है, चेंज भी L name से कर दिया है. char 20 first. So you can see here in the structure L name has gone to the first position at the top, char 20. So in this way you can use first also, and observe here that after first we are not writing any column name, remember. So this is how we can place a column on the first position within the table after changing its name using alter table. कीवर्ड यहाँ पर चेंज आएगा. Let us proceed next. Now if suppose you want to you have already defined primary key in your table, and later on you want to change the name of the, I mean this, delete the primary key constraint you want to, then what is to be done? Deleting of primary key can be done using drop primary key keywords, और कमांड का ये पार्ट है, एक पोर्शन है, ऑल्टर टेबल के साथ ही यूज किया जाएगा. सी द एग्जांपल. ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की. सो प्राइमरी की इज ओनली वन सेट within a table, so it automatically identifies which one primary key, and the effect of primary key is removed from there. तो आप देखें स्टूडेंट आईडी कैर 8, यहाँ पर की जहाँ पर PRI लिखा होता था, यहाँ से PRI has been removed because you have removed the effect of primary key by writing drop primary key.
Now this table can accept duplicate value also in the column student ID because the effect of primary key constraint has been removed. Fine. नाउ अगर आपको कोई प्राइमरी की ऐड करना हो, सपोज अब तो मैंने यहां से हटा दिया था, नाउ ऑनवर्ड्स यू वांट टू ऐड प्राइमरी की इन दिस टेबल अगेन, सो व्हाट टू डू, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पर ड्रॉप की जगह ऐड आ जाएगा, ऐड प्राइमरी स्पेस की, देन विद इन ब्रैकेट द कॉलम नेम ऑन विच प्राइमरी की हैज टू बी डिफाइंड. So I have written add primary key within bracket student ID. So that means we have again defined student ID as primary key. Now in the structure you can observe student ID char 8 PRI primary key यहाँ पर ये बता रहा है. Alright. So here PRI is added again. Here PRI is removed. Fine. So using alter table, using drop primary key we can remove the primary key constraint, or using add primary key we can define the primary key constraint on a particular column. Similarly we can add foreign key as well as remove foreign key also. See, in this table student, we are going to delete the primary key, this foreign key constraint. We have already defined foreign key constraint on course ID. कोर्स आईडी पर हमने फॉरेन की लगाया हुआ था और पहले अभी हम रिमूव करेंगे, फिर उसको मैं ऐड करूंगा अगेन. सो वी कैन डिलीट फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूजिंग ड्रॉप फॉरेन की कीवर्ड विद इन ऑल्टर टेबल. बिफोर गोइंग टू यूज ड्रॉप फॉरेन की वी शुड सी as and when we define a foreign key on a particular column of a table, a foreign key constraint name is inbuilt defined by MySQL. MySQL उस कंस्ट्रेंट का नाम कुछ रख देता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नाम इनबिल्ट अपने आप बना देता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कमांड लिखेंगे शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट. So how create table was issued is being maintained by MySQL server, and within this detail it is maintaining the constraint name, although this constraint name was not given by the database administrator or database creator. ये constraint name student underscore IBFK underscore 1 फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट कोर्स आईडी पर लगा है उसका नॉमेनक्लेचर हो गया है. It has kept a unique name for this foreign key constraint itself, that is student underscore IBFK underscore 1. ये define हो चुका है. You can see it by writing show create table student. Each and everything during the creation of the table, whatever you have given the command, along with that number of things have been defined and added internally by the MySQL engine, that is InnoDB. InnoDB is MySQL server's engine name. तो यहाँ पर आपका ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नाम लिखा हुआ है, इसी नाम को हम लोग डिलीट कर देंगे, देन फॉरेन की कंस्ट्रेंट विल बी removed from the table. How to delete it now? Question is, we will write alter table student drop foreign key, then foreign key constraint name we have written student underscore IBFK underscore 1. ये कमांड इसीलिए मैंने शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट किया था कि इसमें आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट का नाम पता चल जाए, because without knowing the name of this foreign key constraint we cannot delete the foreign key effect from the table. That is why we have displayed it and found the name of foreign key constraint so that we can easily delete it by the command alter table student drop foreign key, then foreign key constraint name. After doing this, again if we write show create table student, then here you can see course id के बाद, यहाँ पर course id के बाद constraint name लिखा था. Here you can see after course id there is no constraint name. That means the effect of foreign key has been
removed from the table. Fine. I think you have understood it well. The foreign key constraint has been removed. Now let us go for adding foreign key constraint again into the table student on course ID. See the command alter table student add. Add के साथ अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा constraint name from your side. Earlier while creating the table you have generated the foreign key and that foreign key constraint was automatically defined by MySQL server. Now using alter table command we have to we have to add foreign key within the table, then we have to define the foreign key constraint name also this time, right? So here we are defining the name of foreign key constraint by writing the command alter table name add constraint fk1 foreign key किस पर लगा रहे हैं कोर्स आईडी पर उसका रेफरेंस कहाँ है वी आर राइटिंग रेफरेंसेस इन द कोर्स टेबल with the column name course id, right? इतना लिखने से सेमीकोलन लगा दोगे तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट लग जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शनल क्लॉजेज और लिखे हुए हैं ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड. What is meaning of cascade? Why it has been written here will be explained in the next coming slide. Before that, let us see whether foreign key is now implemented on the table student on column course ID or not. To verify, again we are writing show create table student. So here you can see primary key student ID, then key fk1 course ID constraint fk1 foreign key course ID references course ID. Right, so here our constraint fk1 is again redefined in place of inbuilt constraint जिसमें आपका क्या आता था इनबिल्ट कंस्ट्रेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईवी fk अंडरस्कोर 1 की जगह हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट fk1 has been replaced. That means foreign key has been defined on this table on course id column of student table. Now right, this is how we can add foreign key constraint onto the table again. Now let us proceed to understand why do we write on delete cascade and on update cascade. Its importance is while we are relating two tables, master table and child table. Master table is a table in which a column is working as a primary key, and child table is a table that has common column in a different table or current table and which is primary key in some other table. So based on this primary key and foreign key concept we set up the relationship and we join two or more tables. तो सवाल आता है कि अगर मैं ऑन डिलीट कैस्केड लिख रहा हूं ऑन अपडेट कैस्केड लिख रहा हूं किसमें वाइल डिफाइनिंग द चाइल्ड टेबल, तो इसका इफेक्ट क्या होगा. अगर इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर मास्टर टेबल से यानी पेरेंट टेबल से और हमारे इस केस में कोर्स टेबल में से कोई भी कोर्स आईडी रिमूव किया जाए तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स आईडीज स्टूडेंट टेबल में किसी स्टूडेंट को असाइन किए गए होंगे वो सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा. ड्यू टू ऑन डिलीट कैस्केड मीन्स removal of a record from a master table affect removal of the related records in the child table. Cascade मतलब इफेक्ट करेगा. Similarly on update cascade, सपोज कीजिए वहां से कोर्स आपने मास्टर टेबल से यानी कोर्स वाली टेबल से C004 हटा दिया, तो अब स्टूडेंट टेबल में जिसके पास भी कोर्स C002 होगा वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे इफ वी इन्वॉल्व ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन. व्हाट इज ऑन अपडेट कैस्केड? Whenever we change
the id, that is course id in the master table. सपोज कीजिए कि मास्टर टेबल में C002 है, इसको मैं C102 करता हूं, तो मेरी चाइल्ड टेबल दैट इज स्टूडेंट के अंदर जिन जिन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में कोर्स C002 था वो ऑटोमेटिकली C102 अपडेट हो जाएगा. So that is when we include this option also on update cascade. These options can be included if we are defining the foreign key using alter table command, or while we are creating a table and defining the foreign key over there. There also at the end you can write on delete cascade, on update cascade, then making a change in the master table or parent table, the child table will automatically be affected, right? यहां पर हम कई ऑप्शंस यूज कर सकते हैं. ऑन डिलीट कैस्केड की जगह वी कैन यूज वेरियस नंबर ऑफ ऑप्शंस. लाइक कैस्केड हम लोग यूज कर सकते हैं, सेट नल यूज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट यूज कर सकते हैं, नो एक्शन यूज कर सकते हैं. सो व्हाट इज देयर पर्पस? कैस्केड का पर्पस मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मास्टर टेबल में कोई अपडेशन करते हैं, किसमें, प्राइमरी की में, या डिलीशन करते हैं किसी रिकॉर्ड का, तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में अफेक्ट करेगा. दैट मीन्स रिमूव हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा. अगर मैं लिखता हूं ऑन डिलीट सेट नल, सो व्हाट विल हैपन? ऑन डिलीटिंग एनी रिकॉर्ड फ्रॉम मास्टर टेबल, मास्टर टेबल से या पेरेंट टेबल से कोई रिकॉर्ड अगर मैं डिलीट करता हूं, सपोज कोर्स आईडी 002 का रिकॉर्ड अगर डिलीट करता हूं, तो चाइल्ड टेबल में उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, बल्कि उसके अगेंस्ट कोर्स आईडी में नल सेट कर देगा. क्या कर देगा? उसकी वैल्यू नल कर देगा. दैट मीन्स इन चाइल्ड टेबल whatever course id was C002 will be replaced with null value, provided उस पर कंस्ट्रेंट टेबल क्रिएट करते समय ये कंस्ट्रेंट ना लगाया गया हो, क्या, डिफॉल्ट नल ना लगाया गया हो. ओके, बाय डिफॉल्ट उस पर नल ना लगाया गया हो. सो या उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट ना लगाया गया हो. अगर आपने उस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाया है तो सेट नल कैसे होगा? दैट इज क्वेश्चन मार्क. सो इफ a common column in the child table is having a constraint not null, then set null will not work over there, right? Restrict का यहां पर मतलब है rejects और delete और update operation for the parent table. अगर पेरेंट टेबल में कोई भी आप चेंज करते हैं, डिलीशन या अपडेशन करते हैं, तो कोई भी एक्शन चाइल्ड टेबल में नहीं होगा. दैट इज ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं आप. और रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन दोनों सिमिलर हैं. नो एक्शन का क्या है? अ कीवर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड एसक्यूएल इन MySQL इक्विवेलेंट टू रिस्ट्रिक्ट. ओके, the MySQL server rejects the delete or update operation for the parent table if there is a related foreign key value in the reference table. Some database systems have deferred checks and no action is a deferred check. In MySQL, foreign key constraints are checked immediately, so no action is the same as restrict. मीन्स आपका जो नो एक्शन है और रिस्ट्रिक्ट है वो सेम है, इतना जानिए आप. आइदर यू पुट ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट और यू कैन राइट ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट और ऑन अपडेट नो एक्शन. सो अगेन समराइज करता हूं कि अगर मास्टर टेबल में कोई चेंज करेंगे मास्टर टेबल की प्राइमरी की यानी कॉमन कॉलम की वैल्यू में, तो चाइल्ड टेबल में वो अफेक्ट करेगा, सेम अफेक्ट, अपडेशन और डिलीशन. सेट नल will set the null value in the child table if any change
in that column is done in the master table. Restrict and no action will do nothing in the child table against any updation or deletion in the master table. So that should be clear to all of you. Here you can see alter table student ID, add constant fk1 primary foreign key, this references course ID, on delete cascade, on update cascade, that we have done earlier. अब सवाल आता है, नाउ द ऑल्टर टेबल फॉर्मेट्स ऑफ ऑल्टर टेबल इज ओवर. ऑल्टर टेबल से आपने क्या क्या किया? You have added new column, you have modified the existing column, you have deleted the a particular existing column, then you have changed the name and position of a column, you have added and removed primary key, you have added and removed foreign key. These many jobs can be performed using alter table command. Here alter table command is a DDL command, data definition language command. Now, how can we drop a table? Dropping a table is very easy. Drop table command deletes the complete table data and table schema. That means table structure along with data in the rows will be deleted completely, and there is nothing left in the database server against that table. So syntax is drop table if exists table name. इफ एग्जिस्ट ऑप्शनल है, यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल ईएमपी, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, लाइक दिस. ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट स्टूडेंट करते हैं, तो अगर एग्जिस्ट करेगा वो टेबल स्टूडेंट होगा तभी तो डिलीट होगा, और अगर नहीं होगा तो आपका सर्वर साइलेंट रहेगा, कोई एरर मैसेज नहीं देगा. अगर आप इफ एग्जिस्ट भी लगा देते हैं तो कमांड में, अगर इफ एग्जिस्ट नहीं लगाते हैं एंड यू आर एडिंग ड्रॉप टेबल XYZ, सपोज XYZ टेबल इज नॉट रेजाइडिंग ऑन द सर्वर, सो इट डिस्प्लेज एरर दैट डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम डज नॉट एग्जिस्ट. तो उस एरर को सप्रेस करना चाहते हैं कि आइदर दैट टेबल इज प्रेजेंट इन द सर्वर और नॉट. इफ प्रेजेंट इट शुड बी डिलीटेड, इफ नॉट प्रेजेंट इट शुड नॉट डिस्प्ले द एरर मैसेज. फॉर दैट पर्पज वी विल include the clause if exists also. That means drop table if exists student. Fine. तो एरर को सप्रेस करने के लिए if exist लगाते हैं, अगर आपको एरर चाहिए तो if exist नहीं लगाइए. So here you can see I have displayed the list of tables in the server. show tables command दिए. So student 1 is coming here and drop table student लिखने student 1 लिखा है मैंने, so student 1 is deleted. Here you can see again we are getting the list of tables, student 1 is not being displayed in the list. That means that is completely deleted from the server. Now renaming the table. Used to change the name of the table. Table name can be changed. See the list of tables, show tables command, course, EMP, EMP1, EMP2, student. There are 5 tables. Out of that I am renaming table EMP2 to employee. EMP2 का नाम बदल के हम employee रखना चाहते हैं. So I will write rename table EMP2 to TO2 employee. That means rename table, कीवर्ड आएगा टेबल, ओल्ड टेबल नेम, एग्जिस्टिंग टेबल नेम, TO2 न्यू टेबल नेम. सो अ कॉपी, नॉट कॉपी, the name of EMP2 will be changed to employee. That means you will not find EMP2, rather you will find its name changed with employee. Again see the list of tables by issuing the command show tables. You will see in place of EMP2 we are having employee table. The content is same. If I write select star from employee or before that select star from EMP2, both are same. The content of both the tables are same because we have just changed the name of the table, nothing else. Alter table से भी आप चेंज कर सकते हैं किसी भी टेबल का नाम.
See, alter table employee, whatever I have changed recently, employee change किया मैंने. Alter table employee, rename EMPL. Now employee is being named as EMPL. Query okay. See the list of table. So employee does not exist now. In place we are having EMPL. This is EMPL, not EMPL1. ऊपर वाला EMP1 है and this is EMPL. So using alter table command also we can rename the table, and using rename table command also we can rename the table. Both are DDL commands. So today you have studied alter table command, rename command, and drop table command. All these three commands are DDL commands, data definition language. इसके अलावा भी आपने एक कमांड और पढ़ी है DDL से, दैट इज क्रिएट टेबल. सो इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है कि DDL कैसे पहचाने. DDL में आप देखें सभी में टेबल कीवर्ड लगा हुआ है. Alter table, create table then table name, rename table then table name, drop table then table name. So always after the specific keyword you are having second word as table. So it is very easy to recognize because most of the DDL commands related to table are having table keywords. So इसको आप याद रख सकते हैं इसमें. अब जैसे DML कमांड है, DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, there is no table keyword, TABLE. Whatever is in your syllabus, I am talking about that. So in your syllabus DDL commands are create table, alter table, drop table, rename table, might be, might not be. And in DML you have to use select, insert, update, delete. Okay, so today we have finished DDL commands related to tables. Now if you have liked and understood the content of this video well, please like, share and subscribe, and share it with your friends so that they can also be benefited. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar.